हेलो। हमने पिछली बार रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था कि रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अबाउट वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम आगे पढ़ते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन का क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करना है यूजिंग मोल कंसेप्ट एंड ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये दो मेथड से किया जा सकता है, मोल कंसेप्ट एंड ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट। Mole concept is a general concept which can be applied at all kinds of reaction. बल्कि जब ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट की बात करें, ये सिर्फ स्पेसिफिक रिएक्शंस पे लगाई जा सकती है। पहले हम बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट है क्या। जैसे एक रिडॉक्स रिएक्शन लेते हैं, A प्लस B गोज़ टू C प्लस D। यहाँ पर A C में ऑक्सीडाइज हो रहा है, B D में रिड्यूस हो रहा है। So using gram equivalent concept, we can say gram equivalent of A equal to gram equivalent of B equal to gram equivalent of C equal to gram equivalent of D। ये है ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे भी लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल, व्हेन H2SO4 प्लस NaOH, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो इसमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। सो ये ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट एक रिडॉक्स रिएक्शन पे लगाया जा सकता है। टिपिकल रिडॉक्स रिएक्शन लाइक A plus B gives C plus D, in which A is going to C and B is going to D, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। अब हम बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट कहाँ नहीं लगाया जा सकता। जैसे रिएक्शन होती हैं A प्लस बी गोज़ टू C प्लस D प्लस E। यहाँ पर A C में रिड्यूस हो रहा है और B D में भी जा रहा है और E में भी जा रहा है। तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट नहीं लगाया जा सकता, ओनली मोल कंसेप्ट। हम दो टाइप के और रिएक्शंस की बात करते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें A गोज़ टू B प्लस C। यहाँ पर A B में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो यहाँ पर भी ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट नहीं अप्लाई किया जा सकता। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विच इज़ द रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, A प्लस B गोज़ टू C। दो स्पीशीज़ मिला के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर भी ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट नहीं अप्लाई किया जा सकता। यहाँ पर सिर्फ मोल कंसेप्ट काम करेगा, ओनली मोल कंसेप्ट। तो हम एप्लीकेशन देखते हैं मोल कंसेप्ट और ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट की थ्रू एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में है 20 ml of solution containing 0.2 grams of impure sample of H2O2 reacts with 0.316 grams of KMnO4। तो रिएक्शन हमें दी गई है KMnO4 प्लस H2O2 प्लस H2SO4 gives MnSO4 प्लस O2 प्लस H2O।
यहाँ पर हमें पता है कि KMnO4 आई मीन Mn यहाँ +7 से यहाँ +2 में जा रहा है, बट यहाँ पर हमें पता है जैसे Mn +7 से Mn +2 पे जा रहा है, बट H2O2 हमने पढ़ा था कि H2O2 acts both as a reducing agent and oxidizing agent and it can both convert into H2O and O2. So there is a possibility कि H2O2 इसमें भी जा रहा हो और इसमें भी जा रहा हो. We are not sure of that. So ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट हम यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते. We may be able to apply, पर हमें पता नहीं कि H2O2 दोनों में जा रहा है, I mean डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है या नहीं. सो इसलिए हम मोल कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो टू बैलेंस द रिएक्शन MnO4 माइनस गोज टू Mn+2. ये हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करेंगे विच इज़ ईजियर मेथड. एंड H2O2 considering that it goes to it ऑक्सीडाइजेस टू O2, हम इन दोनों हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं. तो इन फर्स्ट हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे +4H2O +8H +5 इलेक्ट्रॉन. दूसरी हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे क्योंकि एसिडिक मीडियम है 2H +2 इलेक्ट्रॉन. अब हमें इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है सो एज टू कैंसिल द इलेक्ट्रॉन्स. सो इंटू 2 इंटू 5. So we get 2 MnO4 minus plus 5 H2O2 plus 6H plus gives 2 Mn plus 2 plus 5 O2 plus 8 H2O. So this is the balanced reaction. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 KMnO4 5 H2O2 3 H2SO4 gives 2 MnSO4 plus 5 O2 plus 8 H2O. हमारे पास बैलेंस्ड रिएक्शन है 2 KMnO4 plus 5 H2O2 plus 3 H2SO4 gives 2 MnSO4 plus 5 O2 plus 8 H2O. यहाँ पे हम मोल कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं. तो हमें दिया गया था कि वी हैव 0.316 ग्राम ऑफ KMnO4. 0.316 ग्राम और हमें H2O2 की प्योरिटी निकालनी है. सो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट. सो मोल्स ऑफ KMnO4 इज 0.316 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4 विच इज़ 158 equal to 0.002 moles of KMnO4. So 2.5 moles of H2O2 react with 1 mole of KMnO4 so moles of H2O2 is 0.002 into 2.5 which is 0.005. Now finding the mass, grams of H2O2 equal to 0.005 into 34 which is the molecular mass of H2O2. So we get 0.17 gram. Purity of H2O2 equal to 0.17 gram upon 0.2 gram.
into 100%. We get answer as 85%. तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं. So in this example, 1.25 gram of a sample of CaCO2 is dissolved in 100 ml water. 25 ml of it treated with Ki. Iodine liberated required 12.5 ml of hypo solution, 1 by 25 molar in H plus medium. We have to find available chlorine in CaOCl2. When CaOCl2 is dissolved in water, it releases Cl2. So the reactions we get are Cl2 plus Ki gives I2 plus Cl minus. Now we have a special reaction of iodine and hyposolution. I2 plus S2O3 2 minus gives S4O6 2 minus plus I minus. This is a special reaction we need to remember. It is also known as iodometric reaction. So यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर Cl2 goes to Cl minus and I minus goes to I2, and in the next reaction I2 goes to I minus and S2O3 2 minus goes to S4O6 2 minus. So we see that it is sort of two typical redox reaction, and hence we can apply the gram equivalent concept over here. So using the gram equivalent concept, gram equivalent of S2O3 2 minus equal to gram equivalent of I2 equal to gram equivalent of Cl2. So finding the gram equivalent of S2O3 2 minus, we know that S2O3 2 minus, when it goes to S4O6 2 minus, we can find the N factor, 2S2O3 2 minus plus 2 electron. So N factor for S2O3 2 minus is 1. Now we know gram equivalent equal to moles into N factor equal to moles we can find as molarity into volume into N factor, which is 1 by 25 into 12.5 into 1. So we get 0.5 millimole. A 0.5 gram equivalent. Sorry. So gram equivalent of Cl2 is 0.5. Now gram equivalent is grams upon equivalent weight, which is nothing but gram upon molecular mass into N factor. Now to find the grams, we can use we do 0.5 into molecular mass upon N factor, 0.5 into molecular mass upon N factor, 0.5 into 71 upon 2. We have to also see that earlier the solution was made up to 100 ml and now 25 ml of it was treated. So we will multiply this by 4 to find the mass of chlorine. So we get answer as 0.071 grams. So to find the percentage of chlorine, we do 0.071 gram upon 1.25 gram into 100%, which we get the answer as 5.68%. अभी हमने disproportionation reaction के बारे में जाना था, where A goes to B plus C. So हम जानते हैं कि अब हम देखते हैं कि N factor of redox reaction of disproportionation reaction क्या है. N factor
इक्वल टू इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट upon number of electrons transferred. Where effective molecular weight is the sum of weight, sum of molecular mass of A in both oxidation and reduction half reaction. हम इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल Br2 plus OH minus goes to BrO3 minus plus Br minus plus H2. तो इसके अंदर हाफ रिएक्शंस लिखते हैं. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन in which Br2 goes to BrO3 minus. इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2BrO3 minus plus 6H2O plus 12H plus plus 10 इलेक्ट्रॉन. अब हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं. Br2 goes to Br minus. इसको बैलेंस जब करेंगे तो 2Br माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तो हम यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन. सो व्हेन वी ऐड द टू रिएक्शंस वी मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5. नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इक्वल टू 10. अब यहाँ पर देखते हैं मॉलिकुलर वेट क्या है. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में सिर्फ 1 मोल ऑफ Br2 यूज़ हो रहा है, पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 5 मोल ऑफ Br2 यूज़ हो रहा है. सो इफेक्टिव मॉलिकुलर वेट इक्वल टू m0 which is the molecular mass of Br2 into 1 plus 5 which is 6m0. So n factor for this reaction is 6m0 by 10 which is 0.6 m0. अब हम नए कंसेप्ट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं. सो टू फाइंड द इक्विवेलेंट वेट इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. अब हम जानते हैं कि देखते हैं कि इफेक्टिव मॉलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं. दिस इज द सम ऑफ मास used in both oxidation and reduction half reaction. अब हम इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. Br2 plus OH minus goes to Br minus plus BrO3 minus plus H2O. यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं where Br2 goes to BrO3 minus and reduction half reaction में Br2 goes to Br minus. जब इन रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे so Br2 goes to 2BrO3 minus plus 6H2O plus 12H plus plus 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2Br minus plus 2 इलेक्ट्रॉन. अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में तो 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है,
पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है. सो when we add these reactions, we multiply the second reaction by 5 and the first reaction by 1. So all in all, the net electron transfer is 10 and effective molecular weight equal to m naught into 1 plus 5, where m naught is the molecular mass of Br2, which means 6 m naught. So equivalent weight for Br2 in this disproportionation reaction is 6 m naught by 10. अब हम एक छोटा सा एक और टॉपिक पढ़ते हैं, strength of H2O2. As we know of the disproportionation reaction, 2H2O2 gives H2O plus O2, 2H2O. So 1 mole of H2O2 gives half mole of O2, which means 11.2 liter of O2 at STP, and H2O2 की concentration O2 के terms में represent की जाती है, जैसे 1 molar H2O2 is thus represented as 11.2 volume of O2 and 1 normal H2O2 equal to 5.6 volume of O2, as the n factor of H2O2 is 2. हम इसको एक एग्जाम्पल के तरह से देखते हैं. Suppose normality of H2O2 is given as 2 by 17. Now we have to find strength of H2O2 in terms of available oxygen. So strength of H2O2 equal to 2 by 17 into 5.6 वॉल्यूम ऑफ O2, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था. अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें कंसेप्ट रिवाइज हो जाएं. The neutralization of a solution of 1.2 gram of mixture of H2C2O4.2H2O and KHC2O4.H2O and some other impurities which are neutral consume 40 ml of 0.25 normal NaOH. So पहले ये न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, और उसके बाद on the other hand titration with KMnO4 for 0.4 gram of mixture required 40 ml of 0.125 normal KMnO4. तो हम शुरू में एज्यूम करते हैं millimoles of H2C2O4 dot 2H2O equal to X of KH C2O4 dot H2O equal to Y. जब हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं, H2C2O4 का n factor 2 है और KHC2O4 का n factor 1 है, because they give 2 H plus ions and 1 H plus ions respectively in an aqueous solution. So as we are using gram equivalent concept in neutralization, so I can do 2 into X plus 1 into Y equal to 40 into 0.25. What I am doing is milli equivalent of mixture
equal to milli equivalent of NaOH. This is for neutralization. So this is the first equation we get, 2x plus y equal to 10. Now let's look at न्यूट्रलाइजेशन में हमने 1.2 ग्राम ऑफ मिक्सचर यूज़ किया था और रिडॉक्स रिएक्शन में हम 0.4 ग्राम ऑफ मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर मिली मोल्स रिस्पेक्टिवली हो जाएंगे x/3 एंड y/3. एंड एज वी नो MnO4 माइनस plus C2O4 2 minus gives CO2 plus Mn plus 2. यहाँ पर C2O4 2 minus बात की जाए, यहाँ +3 से +4 जाता है. इसका n फैक्टर है 2 as 2CO2. So यहाँ पर using gram equivalent concept, gram equivalent of mixture for redox reaction equal to gram equivalent of KMnO4 used. So 2 times x/3 plus 2 times y/3 equal to 40 into 0.125. As we know, formula of gram equivalent equal to n into VL. यहाँ पर हम मिली इक्वलेंट में डील कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मिलीमोल्स लिया और हमें वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया. So equal to 5. So we get, all in all, we get two reactions, 2x plus y equal to 10 and x plus y equal to 7.5. Thus x is 2.5 and y is 5. And molar ratio, x ratio y equal to 1:2. हम एक और क्वेश्चन देखते हैं. An equal volume of reducing agent is titrated separately with 1 molar KMnO4 in acid, alkaline and neutral media. The volume of KMnO4 required are 20 ml in acid, 33.3 ml in neutral and 100 ml in alkaline media. So हम एज्यूम कर लेते हैं कि KMnO4 यहाँ पर ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. सो इट गोज़ टू Mn plus x, Mn plus y. So KMnO4 में Mn plus 7 में है. Let's assume that it takes up x electrons and goes to Mn 7 minus x in H plus medium. It takes up y electrons in and goes to Mn 7 minus y. It takes up z electrons and goes to Mn 7 minus. This is in alkaline media and this is in neutral media. So using the gram equivalent concept, milli equivalent of KMnO4 equal to milli equivalent of reducing agent in each case. As we know that n factor in these cases are x, y and z, as x, y and z electrons have been transferred respectively. So x into 20 equal to y into 100, and this is the n factor
we are given that 1 molar of K2Cr2O7 is consumed. So X into 20 into 1 equal to Y into 100 into 1 equal to Z into 33.3 into 1. What we have done, this is the N factor, this is the molarity, and this is the volume. Thus, we are multiplying N factor by the number of moles, which gives us the milliequivalent. So we get the ratio of X is to Y is to Z equal to 5 is to 1 is to 3. So we realize X is 5, Y is 1, and Z is 3. As we know the values of X, Y, and Z, so Cr2O7 2 minus we know the milliequivalent of Cr2O7 2 minus, which is 100. Milliequivalent of Cr2O7 2 minus is 100, as X into 20 into 1 equal to 100, which is the milliequivalent of reducing agent. So to find the N factor of Cr2O7 2 minus in this reaction, Cr2O7 2 minus goes to 2Cr plus 3 plus 7H2O plus 14H plus 6 electron. So N factor is 6. So milliequivalent equal to 100 equal to N factor into molarity into volume. N factor into molarity into volume. So we find out that V equal to 16.67 ml. This is our answer. तो आज हमने पढ़ा कि मोल कंसेप्ट और ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. ऑल्सो वी रेड अबाउट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. सो इसी के साथ all the topics of redox reaction have been covered, and thank you.